Continuation with this chapter, now let's study another topic, that is AC voltage applied to an inductor. And here we are assuming that this inductor is a pure inductor, that is, it has negligible resistance. And an inductor is formed through a metal wire when it is wound in the form of a coil shape, and this circuit element is known as inductor. और क्योंकि एक metal wire से बना है तो इसका एक finite resistance होता है. But here we are assuming that inductor has no resistance, so it's a pure inductor, which is practically not possible. But here we are considering that it's a pure inductor, and we are connecting this inductor through a AC source and when only inductor is connected through this AC source, then this type of circuit is known as pure inductive circuit. This inductor has an inductance L, and this AC source has an EMF of instantaneous EMF equal to EM sin omega t. And when alternating current passes or flows through this inductor, then the AC voltage or potential difference across this inductance is AC voltage across or potential difference across inductance L is equal to instantaneous voltage or AC voltage equivalent to peak value of voltage sin omega t. This is equation number 1. Now as the alternating current passes through this inductor, then across this terminal an EMF is induced, and because of this induced EMF a potential difference developed, and the value of this potential difference due to this inductance L is EMF is induced due to rate of change of current therefore potential difference across L is, we can write VL equivalent to minus L di by dt, where L is self-inductance and VL is the self-induced EMF, and this negative sign shows that self-induced EMF opposes the rate of change of current. That is, when the current increases, it opposes that increase, and when the current decreases, it also opposes that decrease. This we have studied in the previous lectures of EMI. Now we have got two potential differences. Now we can add it by using KVL, that is Kirchhoff's voltage law or loop rule. So using KVL we get V equivalent to Vm sin omega t minus L di by dt, और जो पोटेंशियल ड्रॉप है ड्यू टू रजिस्टर और अक्रॉस रजिस्टर इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे हमने एक प्योर इंडक्टर माना है, तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंसेस होंगे वो उनकी वैल्यूज़ हैं वी एम साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बाई डी टी, और वी कैन राइट वी एम साइन ओमेगा टी equal to L di by dt. Now we can further simplify it, Vm by L sin omega t dt di by dt.
अब कंप्लीट इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट इज वी कैन राइट दैट on integrating both sides with respect to time, we get integration di by dt rate of change of current into dt equal to Vm by L integration sin omega t dt. We get I equal to Vm by L integration of sin omega t is minus cos omega t upon omega and one constant, and this constant is independent of time as well as it is not related with any component of current. तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि जो करंट है वो ऑसिलेट करता है बिटवीन इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल्स और बिटवीन ज़ीरो. तो इसका कोई भी कांस्टेंट जो होगा वो करंट पे या टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा. तो इसलिए जब ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो जब हम टाइम के साथ में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी. ये कांस्टेंट we will consider it as 0 and we get finally minus we can write Vm upon L omega minus cos omega t. Now minus cos omega t can be written as minus cos omega t is equal to sin omega t minus pi by 2. यानी कि जब हम sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू को इलेबोरेट करेंगे और इसको इसके फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे दैट इज साइन ए माइनस बी. तो साइन ए माइनस बी होता है इसका साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. एग्जाम में आप डायरेक्टली लिखेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए है. साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी and sin A is sin omega t, cos B cos pi by 2 minus cos A that is omega t sin B sin pi by 2. Now sin omega t as it is cos pi by 2 is 0, cos 90 is 0 तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, माइनस cos omega t as it is साइन 90 इज 1. तो क्या आ गया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा टी. तो जब भी हम माइनस कॉस ओमेगा टी जहाँ भी देखेंगे उसकी जगह पे हम इसको हमेशा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिखेंगे. देयरफॉर आवर इक्वेशन will become I is equal into Vm upon omega L sin omega t minus pi by 2, and this is the peak voltage, therefore we can write that it's a peak current sin omega t minus pi by 2. Give it equation number 2. And when we will compare equation number 1 and equation number 2, then we can see that this current lags by 90 degree क्योंकि जो वोल्टेज है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वो है Vm साइन ओमेगा टी और इसमें करंट में साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू हो रहा है. सो वी कैन राइट वन नोट दैट current phasor, or first we will write that I lags voltage, current lags voltage by 90 degree, or we can write that phase constant, this is known as phase constant,
जब हमने रजिस्टर पढ़ा था तो उसमें फेज कांस्टेंट की वैल्यू 0 थी, क्योंकि दोनों के फेज एंगल बराबर थे, दोनों में वैल्यू आई थी वी एम साइन ओमेगा टी और आई एम साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे -π/2 हुआ है, फेज कांस्टेंट है π/2। तो और फेज कांस्टेंट फाई फॉर करंट इज 90 डिग्री। और हम फेजर की फॉर्म में भी ये लिख सकते हैं नोट में, दैट इज और current phasor is π/2 behind voltage phasor। now इस इक्वेशन में Vm अपॉन ओमेगा L इज Im। इसमें हम फेजर डायग्राम और टाइम डायग्राम भी बनाएंगे अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल learn about inductive reactance, that is we have written I is equivalent to Vm by omega L sin omega t minus π/2, where Vm upon omega L is Im, peak value or amplitude of current, and omega L is known as inductive reactance. This is very important और इसको डिनोट करते हैं XL से। एंड इसका काम क्या है, ये रेजिस्टेंस के इक्वल ही है। जो रेजिस्टेंस का काम है वोल्टेज और करंट में, V इज इक्वल इन टू आई आर में, आर का जो वर्क है दैट इज टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। हेयर ऑल्सो इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज in inductor. Inductive reactance opposes the flow of current in inductor, and we can write omega L is equal into 2 pi nu into L is equal into XL। तो इससे हम देख सकते हैं कि XL न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी इंक्रीज होगा। इसका कर्व बनाया जा सकता है, इट इज इक्वल इन टू XL or nu, and it's a linear curve. Thus we can write the definition of inductive reactance is, that is opposition offered by self inductance to the flow of current। XL is equal into L omega or 2 pi nu L, or therefore as it plays same role as that of resistance, so its unit is ohm। और वैसे भी हम इसकी SI यूनिट फाइंड कर सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में आ जाती है। SI यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ओम, और एज इट इज इक्वल टू ओमेगा L, L इज सेल्फ इंडक्टेंस, तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा इज 2 पाई न्यू, दैट इज हेनरी, L इज हेनरी मेजर्ड इन हेनरी, और 1/T, न्यू इज 1/T, दैट इज सेकेंड। और सेल्फ इंडक्टेंस इज गिवन एज, वी कैन राइट L एज इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल इन टू -L di/dt। तो L कितना हो जाएगा, V इंटू dt/di। तो इससे हम इसकी हेनरी को लिख सकते हैं V से वोल्ट, टाइम दैट इज सेकेंड, एंड करंट दैट इज एम्पियर। सो वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया। वोल्ट अपॉन एम्पियर इज व्हाट, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो इसीलिए इसकी यूनिट हो गई ओम। और इससे हम इसके डायमेंशन निकाल सकते हैं। डायमेंशन
of inductive reactance, it is given as volt upon ampere. That is, volt can be written as work upon charge. That is, volt upon ampere is equivalent to work upon charge into ampere. Work is m1 L2 T minus 2. Charge can be written in the terms of current into time, that is ampere into time into ampere. So its dimension is m1 L2 T minus 3 A minus 2. Dimension of inductive reactance. Now we can see that the behavior of a pure inductor for DC current or when connected through AC, that is behavior of pure inductor for direct current. As we know that direct current is constant with time, it's not changing with time, therefore frequency for direct current is 0, therefore inductive reactance is equal to 2 pi nu into L will also be 0. That is, there is no obstruction offered to the flow of direct current. Therefore, we can say that direct current can easily flow through inductor. And behavior of pure inductor for AC, as we know that there is some finite value of a frequency, therefore inductive reactance also have some finite value, as it is given as 2 pi nu L. Thus there is some finite opposition to the flow of alternating current. Thus we can write that AC cannot flow easily through inductor. Also for AC, if frequency is very high, that is, we can say it is infinite, then inductive reactance will also become infinite. That is, infinite obstruction offered to the flow of alternating current, therefore current will become 0, or at this stage no current, thus no current flows and inductor behaves as an open circuit for high frequency AC. Now let's study about phasor diagram and time diagram. Now let's draw a phasor diagram for pure inductive circuit. Consider 4 quadrants. In first quadrant, from the origin, a line is originating. Known as voltage phasor at an angle of omega t, that is phase, and current is pi by 2 behind, current phasor is pi by 2 behind the voltage phasor, that is it is equal to 90 डिग्री, और इनका जो एम्पलीट्यूड है वो है स्मॉल वी एम, मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ करंट, that is amplitude I m,
vertical projection is equal to displacement, that is V equivalent to Vm sine omega t. Is the displacement of voltage, and it is equal to instantaneous current I is equivalent to Im sine omega t minus pi by 2. This is the phasor diagram where current is pi by 2 behind voltage phasor. Current phasor is pi by 2 behind voltage phasor. Now let's draw time diagram for instantaneous voltage and instantaneous current.